औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि इमिग्रेशन के हवाले से है, और इसमें दो तीन सवालात हमने ऐसे चुने हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सवालात आए हैं उनको हमने चुना है, और थोड़े से टाइम में हम आपके लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। और आज हमारा साथ देंगे मारूफ अवोकातो माउरिसियो नार्डोसा। तो हम इनसे कुछ सवालात, दो तीन सवालात ही पूछेंगे क्योंकि इनका टाइम भी कीमती होता है। तो इनको आज हमने अपने साथ शामिल किया है। ये जो इमिग्रेशन जो थी सनदौरिया जो खुली थी, उस हवाले से हम थोड़े से सवालात इनसे करेंगे, जो आगे भी इनसे सवालात करते रहते हैं और आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज हमने तीन सिर्फ सवालात चुने हैं, उन पे सिर्फ बात होगी। Buonasera avvocato, come stai? Buonasera a tutti, bene, grazie caro Mosen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sì, adesso c'è solo 2 o 3 domande devo fare, noi facciamo subito. Prima domanda c'è che se controllo la pratica con SPID e viene scritto parere negativo dalla parte di ITL, cosa succede? Sì, lo puoi tradurre già, puoi tradurre la domanda eventualmente. sì, अगर आप स्पीड खोलते हैं अपनी, स्पीड के साथ प्रातिका अपना खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि नेगेटिव लिखा हुआ आता है, तो उसके हवाले से क्या करना है ये हम वकील से पूछ रहे हैं। Sì, Maurizio. Perfetto, va bene. Allora, molte persone hanno chiamato e ci hanno chiamato perché nel momento in cui vanno a controllare la pratica all'interno del sito del Ministero dell'Interno, nelle comunicazioni trovano in pratica la comunicazione di parere negativo da parte dell'ITL. L'ITL è l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che sostanzialmente svolge una funzione di controllo idonea a verificare il reddito del datore di lavoro. E spesso, diciamo, quando si verifica questo tipo di informazione all'interno del sito, significa che la problematica che potrebbe esserci è quella proprio relativa al reddito in capo al datore di lavoro, cioè insufficienza del reddito in capo al datore di lavoro. E questo, diciamo, spesso comporta questa comunicazione da parte del Ministero, appunto, nel quale indica che c'è un parere negativo da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. हाँ जी, इसमें वो बता रहे हैं कि अगर जो सबसे ज़्यादा इस पे आ रहा है वो ये है कि जो मालिक होता है दोतोरे दी लवोरो, उसका अगर खुद कम हो तो जो लेबर इंस्पेक्टर है वो नेगेटिव लगा देता है, और कहता है कि जो सबसे अहम और सबसे जो आम मसला यहाँ पे आ रहा है जो ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को वो ये है कि रेडितो जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो लेबर इंस्पेक्टर है वो इसको नेगेटिव कर देता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। Un'altra domanda è, avvocato, che perché è importante fare elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato in corso della domanda? तो ये मैंने सवाल पूछा इनसे कि अगर घर की बजाय आप अपना जो होता है, जो आपने एप्लीकेशन की होती है इमिग्रेशन वगैरह की, या फिर आप करते हैं कोई वकील करते हैं, तो जो मंगवाना होता है आप अपना लेटर जो आपके घर आना होता है या फिर मालिक के घर आना होता है, वो अगर
वकील का जो स्टूडियो है उसका अगर पता दे दिया जाए तो वो कैसा रहेगा, इस हवाले से जो है वो हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। सी Maurizio। Allora, è importante in questa fase soprattutto fare le lezioni di domicilio presso l'avvocato, perché che cosa succede? Succede che molte persone, quando hanno fatto la domanda di sanatoria, che cosa hanno fatto? Non hanno indicato la loro mail, oppure potrebbe succedere che il lavoratore abbia trasferito eventualmente il domicilio, la residenza, quello che è in un'altra parte. Potrebbe appunto poi succedere che la prefettura faccia la comunicazione di un rigetto oppure di un preavviso di rigetto solo ed esclusivamente al datore di lavoro. E quindi in questo caso succederebbe che il lavoratore invece si troverebbe nella condizione di non conoscere lo stato della procedura e lo stato del procedimento, appunto perché la prefettura, ad esempio, spesso e molte volte notifica questo tipo di informazione, e nello specifico l'informazione appunto che avevo detto prima della mancanza di reddito in capo al datore di lavoro, solo al datore di lavoro e non al lavoratore. L'elezione di domicilio invece serve ed è necessaria presso lo studio. L'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato significa che una persona, in pratica il lavoratore in questo caso, si affida all'avvocato che comunica alla prefettura che tutte le comunicazioni relative alla che riguardano il lavoratore vengano effettuate presso lo studio dell'avvocato. Proprio, e questo diciamo passaggio serve appunto a mettere anche il lavoratore al corrente rispetto a quello che succede sulla pratica di emersione. ओके तो ये सवाल था कि अगर अपने घर की बजाय वकील के दफ्तर का दे दिया जाए एड्रेस, आपकी कम्युनिकेशन के लिए प्रेफेक्टूरा और वकील के दरमियान जो भी आपके लेटर वगैरह आने हैं वो अगर वकील के स्टूडियो पे आए तो वो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा इन्होंने बताया कि ये होगा कि जब आप प्रेफेक्टूरे में या वो जो होता है क्या कहते हैं वो उसमें कम्युनिकेशन के लिए लेटर जो है पता जो है वकील का दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होती है वो डायरेक्ट वकील के पास होती है, बजाय इसके कि लोगों को नहीं पता होता कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन लगा हुआ आया है और क्या करना चाहिए इसका। फिर वो पूछते रहते हैं इधर उधर से और कहीं वो इसमें दरमियान में वास्ते डाल के तो वकील तक पहुंचे और तब तक जो DHE 20 का टाइम है वो गुजर चुका होता है। अगर आपने डायरेक्ट वकील का ही दिया होगा एड्रेस तो वो डायरेक्ट वकील के पास पहुंच जाएगा, बजाय इसके कि वो आप पूछते फिरें। वकील खुद ही उनसे जो है कम्युनिकेशन कर लेगा और एक साइकिल बनता है कि वकील इस बंदे ने रखा हुआ है या वकील के थ्रू इसने दुमादा किया हुआ है, तो वो प्रेफेक्टूरे पे भी थोड़ा असर आता है कि इन जवाब वगैरह लेने देने में भी। और इस तरह जो कम्युनिकेशन होती है प्रेफेक्टूरा या कस्तूरा भेजता जाता है और वकील जो है वो उसका रिप्लाई करता जाता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी कि कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा है अगर आप एड्रेस वकील का देते हैं या ईमेल एड्रेस जो है वो वकील का देते हैं। आगे हम चलते हैं अपने कि अगर हमने ये एड्रेस पहले किसी और का दिया हुआ था या वकील का एड्रेस कैसे देना है। Maurizio, c'è un'altra domanda che elezione di domicilio come si fa? Come possiamo fare elezione di domicilio? Allora, per l'elezione di domicilio basta recarsi personalmente presso lo studio dell'avvocato, firmare una procura, quindi una delega, nella quale si dice che si dà la rappresentanza all'avvocato al fine, diciamo così, poi di interconnettersi con la prefettura. Cioè, a quel punto la prefettura non è più tenuta a dare le comunicazioni al lavoratore, ma bensì le farà direttamente all'avvocato. È chiaro che questo passaggio è importantissimo perché consente appunto di conoscere poi passo passo tutto quello che succede su quella pratica, in quanto la prefettura da quel momento in poi
nel momento in cui viene fatta appunto questa elezione di domicilio, scusatemi un attimo, nel momento in cui viene fatta questa elezione di domicilio sarà tenuta a comunicare direttamente la questione le questioni collegate alla sanatoria direttamente all'avvocato. È chiaro che questo, diciamo, costituirebbe, Lukman, una sicurezza anche per il lavoratore, in quanto costituirebbe appunto quindi una sicurezza anche per il lavoratore, proprio perché è sicuro che tutte le comunicazioni, comunque lui viene a conoscenza di tutte le comunicazioni che lo riguardano, e questo è il principio, è il concetto. ओके तो ये भेजने का तरीका ये है कि अगर आप जो है वो आपका दुमादा हुआ है इसका इमिग्रेशन का, लेकिन आपका कोई जवाब अभी तक नहीं आया और आप चाहते हैं कि जो आपके सारे जवाबात हैं आप कोई एक वकील जो है वो आप अपने किसी भी शहर में या मॉरिशियस साहब को भी आप जो है वो रख सकते हैं। ये नहीं कि आपका वो आना है जवाब लेटर के जरिए तो फिर ही आपने वकील करना है। आप वकील पहले भी कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है इन्होंने बताया कि सिर्फ आपने एक देलगा लिखना है वकील के नाम पे, ये मेरी तरफ से ये सारा प्रोसेस, जब तक ये मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस है मेरी तरफ से मेरा वकील करेगा। इससे ये होगा कि डायरेक्ट जो भी कम्युनिकेशन या फिर लेटर वगैरह जिसे कहते हैं या ईमेल है जो प्रेफेक्चर की तरफ से आएगी वो डायरेक्ट आपके वकील को आएगी और वही उसका फौरन जवाब दे देगा, क्योंकि उससे पहले पता होगा कि क्या इन्होंने पूछा, बजाय इसके कि आप जो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके पास के 10 दिनों के अंदर अगर आप DHE-20 का जवाब दे देते हैं तो फिर आपको अदालत में नहीं जाना पड़ता। अदालत में आके 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो आपका आ जाता है DHE-20 डायरेक्ट वकील के पास, ये खुद ही कम्युनिकेशन कर लेता है, तो इससे आपका जो इमिग्रेशन वाला सिस्टम है वो पॉजिटिव हो जाता है। Lukman, scusami, Mosen, scusami, ti volevo soltanto sottolineare il fatto che non è, diciamo, soltanto importante per il 10 bis, ma questa elezione di domicilio va fatta già nel momento in cui sì, io ho parlato così, io ho detto così, sì. Questo è importante, perché anche quando c'è quella comunicazione nella quale ci dice che c'è un rigetto da parte dell'ispettorato territoriale del lavoro, già in quel caso, già in quella situazione va fatta immediatamente l'elezione di domicilio. Sì, io ho detto così. Ok, grazie Maurizio, tantissimo grazie a te per il tuo tempo. Grazie a tutti e speriamo di rivederci molto presto. ग्रासे इंशाल्लाह। अब जो भी आपके सवालात और भी हो वो हमारे नीचे कमेंट करें और अगली वीडियो में आपसे फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Buonasera a tutti.